Okay, so let's begin. So, hi Bhaiya, welcome to our channel, and I'm more excited to know your journey, how you cracked the startup, and so let's begin. Can you briefly introduce yourself, uh, from your college journey? Please briefly introduce yourself. Sure. Hi, Gagan, and it's nice to be here. I'm Matan. I've been in the industry for 4 years now, almost going to five. And my journey has taken a lot of turnaround. So earlier, after leaving college, I actually took a break because I wanted to figure out what I wanted to do. And I worked briefly in a game development startup. From there, I pivoted to animation programming because that was closest to my skills at the time. And then I realized that this field is not for me. So as a transitionary step, I moved to Kia, and from there I moved to front-end development. So now I'm like a front-end generalist working on both web and mobile. So currently I'm at Swiggy, and here my mandate is to handle both feature requests on both web and mobile and deliver those from here. Feature request to production. I have to take it through the entire journey. So that is a brief about me. ओके एंड आपकी कोडिंग जर्नी के बारे में बात करें सो आपने कब से स्टार्ट किया था फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर और फ्रॉम योर सेकेंड ईयर और आप बताएंगे जरा आपकी कोडिंग जर्नी. Honestly, so a little bit of coding. The first intro I had to it was during 11th and 12th वो informatics के course होते थे ना. या So little bit there, just but just enough because like I was proficient with computers. I was not proficient with coding, but I was proficient with computers from a very early age. मतलब बचपन से गेम्स खेल रहा हूँ तो आइडिया था कंप्यूटर्स का. तो like transitioning to creating small things in NetBeans or creating tables in SQL, that was not a big deal for me क्योंकि command line के लिए usage करना पड़ता था given the amount of mods I installed in games and everything. So वहां से I got a taste for programming in college actually. So depending on the subject, it actually sometimes so we started with C and C++ in the first year, and that was just intro to computer science. But now that I look back, I feel like that was like a really poor choice on our college's part. C++ is a difficult language to start with. There is a point to be made that C is very close to how the computer actually works. So if you do learn it, क्या कहते हैं, you do grasp how the computer actually works, and that makes you a better computer scientist later down the line. But if you want to get productive quickly, and होता क्या है ना कि C++ में और C में you'll make some programs that you're not that the responsiveness is not there. तुम कुछ प्रोग्राम क्रिएट करोगे, वो कुछ क्लैंग से तुम उसे कंपाइल करोगे, चलाओगे, वो हेलो वर्ल्ड लिख रहा है. ओके, what does that achieve? Versus Python में you can create a UI with Tinter or anything, or in JavaScript you create something with React. ठीक है, उसमें the person can see exactly what is happening, and that way the responsiveness is there, and that way you are engaged more. So I actually go back and forth on what should be a good language. But yeah, so C++ के साथ start किया था. The way I actually got hooked was in I think that was in second year, first semester. We had a computer architecture course, so that was concerned with how CPU actually works and how everything actually works. And me and my friend got this idea that we will create a simulation of Intel 8085. This was like one of the earliest programming chips. So वहां से हमें प्रोजेक्ट्स के साथ घुसने का आइडिया मिल गया. Now I wouldn't say कि we were very good student at any point of time. Like we are all like 6 pointer 7 pointer folks मेरे friend group में. But like more we were more engaged with the ideas and everything. Towards the end of it, I went into game development, so I was more into C Sharp and Unity. Although looking at the environment at the time for game development, that didn't really mesh well with me. Like game development can be a very stressing field, and it's not the most well-paying, if you know. So क्या कहते हैं, there are points like it is not for everybody. If you are really passionate about it, you should really take a dive in. And I did take a dive in, but it turned out that my passion for it didn't trump the hardships that came with it. So after that, my animation programming हो गया because it was close enough field, and वहाँ पे it was mostly Python that I worked with. So
there's this animation program called Maya. उसके अंदर हम scripts and all create करते हैं for the artist and everything. And it was mostly that sometimes there's also this composition. So once the animation is created, you have to compose it and create a video out of it, right? So एक composition software new करके, so that also was there. वो भी Python. There is also this very esoteric, like domain specific language called Maya embedded language that we worked with. It was basically a wrapper on C++. वहां से basically I got the idea for automation, but I realized कि even animation programming में मतलब मजा आ रहा है, but इतना मजा नहीं आ रहा कि I will be very happy with the lower pay, you know. So I decided कि अच्छा ठीक है, I need the pay in the meanwhile. So what can I actually just quickly transition to? Because I was doing automation, I moved to like QA automation. Like it took me like half a month to understand the basic concepts of QA, and then another half a month to actually create a test bed, and which is very important for anyone who's trying to switch fields or even get into this industry. Because honestly, जितना मेरे टाइम में हार्ड था उससे बहुत ज्यादा हार्ड इस समय है for a new person breaking in. Yeah. So you have to distinguish yourself. So uh, like have something that you can show, because देखो ऐसा होता है कि once you have experience, right, like मेरे लेवल पे जब बंदा आ जाता है तो हाँ ठीक है, मेरा लिंक्डइन ही बता रहा है लोगों को. So my profile will be selected basis my experience and everything. They won't look at my personal projects all that much. Like there are a few foreign companies that might look at it, but otherwise they won't. बट क्या कहते हैं, व्हेन आई एम ब्रेकिंग इन, सो मैंने 3 ट्रांजिशंस करे मेजरली, लाइक फर्स्ट इनटू गेम डेवलपमेंट स्लैश एनिमेशन प्रोग्रामिंग, देन इनटू क्यूए, देन इनटू फ्रंट एंड. सो हर बार आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. आई वाज बेसिकली लाइक फ्रेशर इन दैट फील्ड, राइट? तो मैं आई हैड टू गो इन विद अ प्रोजेक्ट. सो फॉर एग्जांपल जब लाइक गेम प्रोग्रामिंग के लिए किया था, सो आई हैड दिस गेम लाइक स्टेप रनर. अब तो मेरा गूगल अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि मैंने पे नहीं किया बहुत टाइम से. बट आई हैड अ गेम ऑन एंड्रॉइड टू शो कि अच्छा नहीं भैया, आई हैव समथिंग टू शो फॉर इट. एंड देन क्या कहते हैं, when I moved to QA, what I did was I found some open APIs, created a very small Android app around it, tutorials पढ़ के and YouTube videos देख के, and then I created an automation suite around it. तो क्या CI/CD पाइपलाइन कैसा होता है, किसके अंदर कैसे टेस्ट इंटीग्रेट होंगे, उससे ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करूँ. पाइथन मुझे ऑलरेडी आती है, तो मैं उससे रिपोर्ट जनरेट करके ईमेल सेंड आउट कर सकता हूँ, स्लैक इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. ये सब दिखाया मैंने करके. ये सब प्रोजेक्ट मेरे पास रेडी था. तो हर इंटरव्यू में, इवन इफ इंटरव्यू डिडंट गो ऑल दैट वेल, मैं लास्ट के 5-10 मिनट लेता था कि कैन आई शो यू समथिंग, एंड आई शोड देम. और वो यू शुड बी रेडी विद इट. इट शुड बी समथिंग टैंजिबल दैट यू कैन शो. सो क्या कहते हैं, उसके बाद then I moved to this like when I moved to Swiggy, what I did was like I was first working as a like towards iOS development. So if you see my GitHub, there are like 89 apps in iOS. But वो छोटी छोटी apps, there are very small apps. What I did was I picked a topic, सोचा भैया कोड डेटा क्या होता है, या फिर क्या कहते हैं Realm को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, स्विफ्ट यूआई वर्सेस यूआई किट, कुछ भी उठा लिया, कोई एक छोटा टॉपिक उठा लिया, उसके एक ऐप बना लिया. आपने उसे पब्लिश नहीं करना है, बट आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है. एंड दैट दैट क्रिएट्स अ पोर्टफोलियो फॉर यू. देन एट दैट टाइम एक्चुअली iOS की इतनी ओपनिंग्स नहीं थी, तो आई हैड टू क्विकली पिवट, एंड आई पिवटेड टू रिएक्ट नेटिव, क्योंकि स्विफ्ट यूआई के आसपास की चीज थी वो. मतलब स्विफ्ट यूआई इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन लेयर वेरी क्लोजली और वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हाउ रिएक्ट एक्चुअली वर्क्स. तो मैं रिएक्ट नेटिव पे स्विच करा. मैं व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ जोमेटो का क्लोन, और वो मैंने स्विगी के इंटरव्यू में जाके दिखाया. सो उससे आई वाज एबल टू सिक्योर, क्या कहते हैं, लाइक these are the things that help me secure a job. As far as coding goes, once you get a grasp of any one language, once you are proficient with it, not even proficient with it, once you are productive in it, so it doesn't matter how what language you are, because it won't take you all that much to pick up another language. Like हाँ ठीक है, if you go from a high level language to a low level language, then there will be a learning curve. For example, अगर तुम हमेशा से जावास्क्रिप्ट में काम करते आ रहे हो, तो C++ और C में तुम्हें मेमोरी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. That will be a learning curve for you. But if you are dealing with high enough languages जहाँ पे एटलीस्ट GC है, गार्बेज कलेक्शन है, या फिर ARC है जैसे स्विफ्ट में होती है, तो जहाँ पे तुम्हें मेमोरी में की तो सोचना नहीं पड़ रहा ना, या फिर तुम बहुत ही कोई हाई वर्कलोड चीज नहीं कर रहे हो, एंड विच एज अ फ्रेशर यू वोंट बी डूइंग एनीवेज, लाइक दिस विल कम लेटर डाउन द लाइन फॉर यू. So वहां पे it doesn't matter which language you are, because you can actually pivot. So for example, for me, like C++,
At this point, I can't even, I can write basic C, C++, but I know how I will write it. I worked in C Sharp. Then for automation, I worked in Java and Kotlin. Okay. For development, I first went to Swift. स्विफ्ट के बाद आई वेंट टू जेएस से मेरे को नफरत होगी तो मतलब आई देन डिस्कवर टाइपस्क्रिप्ट कि Okay. मतलब दैट इज द ओनली वे टू वर्क विद जावास्क्रिप्ट इज सच अ शिट लैंग्वेज ओवरऑल बट ठीक है मतलब दैट दिस इज माय ब्रेड एंड बटर एंड आई हेट इट मतलब Yeah. but TypeScript makes it easier to follow, you know. So I work with TypeScript. Now I'm working on a few backend projects and I'm working in Go. So मैंने ये सारी लैंग्वेजेस कर लिया. Am I proficient in everything? नहीं मतलब I'm proficient in I would say Swift में और mostly in TypeScript. बट मैं गो में इतना प्रोफिशिएंट हूँ गो में तो एक्चुअली इट डजंट इवन टेक ऑल दैट मच टू गेट प्रोफिशिएंट सो अब इस पॉइंट पे मैंने आई हैवंट कॉट अप विद व्हाट इज हैपनिंग लेटली इन सी शार्प लैंड सो but it doesn't matter because if tomorrow let's say my mandate is that I have to deliver something in C sharp it won't take me all that much. It will take me like 1 week to understand it's like आजकल language में क्या हो रहा है and another week to actually start implementing. So I would say कि don't think about language all that much, think about what you want to build. और once you have that thing built तुम लैंग्वेज सीख जाओगे सो क्या कहते हैं बेसिक कंट्रोल फ्लो सीख लो बेसिक वेरिएबल्स और वो सब सीख लो दैट इज फाइन उसके बाद जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग स्टफ देन यू विल लर्न द डेप्थ ऑफ द लैंग्वेज कि अच्छा फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिल्डिंग लेट्स से बैकएंड सर्वर इन Yeah. नोड.js ठीक है एंड तुम डिस्ट्रक्चरिंग बार बार कर रहे हो बिकॉज ओ दिस लुक्स गुड लेटर ऑन एज यू स्केल अप यू विल रियलाइज ओके डिस्ट्रक्चरिंग की एक गार्बेज कलेक्शन की कॉस्ट आती है right but this is stuff you will learn later with experience first pick a language learn the very basics of it and start building it that's what I think that is what has worked for me so that is what I tell others. Okay, okay. And what about DSA? अपने DSA तो सीखा ही होगा, so आप बताएंगे आपका DSA जर्नी. DSA और मेरा बहुत बुरा रिलेशन है so Okay. DSA के साथ ना so I was always intimidated by it मतलब like we had the first DSL class जो कॉलेज में होती है उसमें B plus आ गया I was happy enough with it फिर जब actually like interviews होने लगे for companies I wanted to sit for वहां पे मतलब there was a time जब interviews होते थे और मेरे से bubble sort भी नहीं लिखी जाती so Okay. but yeah like to be very honest मैं Okay. मेरे को बस ये था कि अरे इसका क्या यूज है फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं बट वो लेटर ऑन यू लर्न इसका यूज है बट नॉट इन द वेरी स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ सेंस कि हाँ ठीक है तुम कभी बबल सॉर्ट लिख नहीं रहे हो जिंदगी में ठीक है यू विल ऑलवेज यूज इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शंस बट वंस यू ग्रास्प द बेसिक्स ऑफ इट कि अच्छा भैया व्हाट इज द डीएस आई शुड आई गो फॉर अ हीप हियर शुड आई गो फॉर ट्री हियर मतलब और you understand कि basically once you do Hi. hello hi I lost you in the middle Okay, okay. sorry Yeah, so yeah. I was saying कि DSL को is necessary मतलब at any मतलब you will have to learn it मैंने नहीं सीखा कॉलेज में तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आई आई Yeah. वुड से कि भैया कॉलेज में सीख लो इट्स इजियर दैट वे ठीक है एंड यू डोंट हैव टू डू लाइक thousands of questions on lead code all you need to do is you need to have the basic grasp of it like there's a very good book called common sense algorithms I'll share the link with you if you're Yeah, interested yeah. Sure. so get that book ठीक है just read up the chapters and it takes you very very slowly through like building up the concepts in your head and Hmm. उसके बाद there is not all that much maths like if you get gang of four की books there are so much mathematical proofs कि देख के बंदा डर जाता है Hmm. right so you skip all that math ठीक है so if you're wanting to write a white paper that is not the book for you but if you want to become a better engineer in day to day life that is a really good resource another is there is this thing called need code like lead code but with starting with an n it's like a curation of all the questions that are mostly asked in interviews ठीक है Okay. एंड उस बंदे ने अपनी साइट बना रखी है और उसने डिस्ट्रक्चर कर रखा है हर चीज को कैसे जैसे कि अच्छा ये एरेस के क्वेश्चन है ये हैशिंग के Hmm. क्वेश्चन है ये टू पॉइंटर क्वेश्चन है all the way down to dynamic programming with 1dp 2dp or greedy algorithms honestly greedy algorithms unless you're applying for like tower research जैसे financial American companies nobody's going to ask you all that stuff Okay. mostly they'll ask you like at more max they'll ask you like tree and graph questions and that is
graph is stretching it a bit. That if you learn about trees, ठीक है, like simple VFS, DFS, heapify up, heapify down, ये सब चीजें सीख लोगे, it won't like balancing a tree, all that jazz. Once you know all that stuff, you will clear most of the interviews you face. But do understand कि भैया why they are there, like stacks का क्या use है, queues का क्या use है, ये चीजें होना जरूरी है, because this becomes like a tool belt in your day to day life. वो हर बंदा बोलता है कि इसका मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, और वो हर बंदा जो बोलता है वो गलत बोलता है, क्योंकि वो एक्चुअली जरूरत पड़ती है, they just don't realize they're using it. Okay. And my So question I would say is, yeah. if any fresher want to approach FANG companies, so how can that fresher student can approach that FANG? So can you give Oh, any hints? then mostly focus on DSA. If you're a fresher, okay, you won't have a lot of system design under your belt. Okay, do learn about system design, but again, unless you have built some component that is actually live, a lot of that stuff is going to go over your head. DSA को make it like your like, and that should be the light star, so load star in your resume. So lead code पे फिर you actually need to start doing, like, if you are aiming for FANG companies. But I would say कि why to aim for FANG companies at all? Like, there are a lot of companies that are like that will give you a start. And I would say कि first get into a company where you will actually have a chance to learn from other people. उसके बाद 1-2 साल बाद कर लो दोबारा FANG company के लिए try. But directly FANG company में, like, it's a crapshoot. So either you can actually go into a team where they actually teach you stuff, and they actually handhold you till you get to a point where you're actually productive, or they actually throw you through the wind. So ये दोनों चीजें बड़ी possible है FANG companies में. So अगर तो you are fine with that, that is your prerogative. But I would suggest कि go for a company where actually you learn a bit, stay there 1 to 2 years, learn all that you can, and उसके बाद switch करो, किसने रोका तुम्हें? So, and you also have to realize that FANG companies are not all that easy, and there are a lot more competition happening there. And I would say, as a fresher, your first target should be to get into the industry. उसके बाद अच्छी जगह पे बाद में चले जाना. पहले get into the industry, see how stuff happens. So I'm not saying कि अपने, if you are aiming for a FANG company, I don't want to destroy your dreams or anything. But I would say that there are other ways to get where you're thinking to get, which will be easier, and because what happens there, कि when people aim for things like FANG companies and they don't crack it after a while, they get very dismayed, and उनका ना इस पूरी फील्ड से उठ जाता है, and that's not something I want to happen out there. Like, हमें चाहिए इंजीनियर इस समय, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए. Like, इंजीनियर्स की वैसी कमी है, और अच्छे इंजीनियर्स की और भी कमी है. ओके. जैसे आपके राउंड्स हुए थे स्विगी के, then आप बताएंगे कौन से क्वेश्चंस एंड ऑल पूछे गए थे आपके राउंड्स में, क्या आप बताएंगे? Sure. So generally, like, with front end, there is like so it depends actually किस position पे. So अभी भी actually मेरे interview चल रहा है. I'm like in the midst of a switch right now. So I can give you perspective on both sides. So as far as development goes, there are usually 4 rounds, right? Yeah. मतलब हर जगह almost, like, they can go up and down 1 or 2. So for example, Hotstar में 6 round थे, Swiggy में 4 round थे, right? So there will be like first round is PSDS, so that is like problem solving, and I'll go DSK round. So that is like 1 hour round. They ask you very easy questions, to be honest. Like, agar if you've gone through a few questions on lead code and stuff, na, it won't be really that much of an issue for you, provided you have seen those problems. Basically, hota kya hai ki once you see a few of the problems, you get this mental map in your head कि बाकी चीजें, even if you can't solve it, they're actually looking for कि how do you approach the problem, right? So तुम्हें approaches पता चल जाएगी, so you can come close to solving it, and even that is something that can get you into it. ठीक है. So मेरा algo DS का उसमें तो राउंड बहुत ही अच्छा गया था स्विगी में, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चंस थे. Like, I'll give you an example. Like, basically एक array है, ठीक है, उसमें digits है 1 2 3 4 let's say, और हर हमें एक आउटपुट array देनी है जहाँ पे क्या कहते हैं, on nth index there will be the multiplication of every क्या कहते हैं like number in the array except for this one. So जैसे 1 2 3 4 है, तो 2 3 4 क्या बता, like 6 6 24 तो 24 1 में डलना चाहिए, ऐसे ऐसे करके सारों में डलना चाहिए.
Now, if you haven't done algo ds and तुम्हें basic language पता है, then also you can solve this problem. So you can do a nested for loop and दोनों के ऊपर बार बार run करोगे and you can do it. ठीक है? But then if you know a little bit about algo ds, you know कि it's a n square solution. So अगला question उसका ये होगा interviewer का कि how can we make this more performant? So then like if you have done a little bit of algo ds, then you can think अच्छा हाँ यार मैं एक hash map बना लेता हूँ या फिर एक array बना लेता हूँ and I'll do one pass and store all the values and उससे मेरे को array मिल जाएगी. So वो ON का solution बन गया, but in that case अब तुम्हारी storage ON की चली गई है. Now if you have really looked into this, if you have really practiced, then you know कि if you don't like, the caveat here is कि output के array को हम consider नहीं करेंगे as a memory consideration, but क्या कहते हैं, if you if you they will ask you कि how can you reduce the space complexity as well, because this actually question can be done in O of 1. So उस केस में actually this is a two pointer problem. So basically you run over the क्या कहते हैं array twice, एक बार multiplying and then dividing it, ऐसे करके चलता है. So इससे तुम्हारा output बन जाता है. Okay. Right? So this is the kind of stuff. So if you have practiced, it will be easy for you. If you haven't practiced, it can be hard for you. ठीक है? कई लोग होते हैं जिन्होंने जीरो प्रैक्टिस करी होती है और वो सारे क्वेश्चन फिर भी तोड़ देते हैं, बट यू डोंट वांट टू टेक दैट चांस, यू वांट टू एक्चुअली प्रैक्टिस. ठीक है? वो द चांसेस दैट यू आर दैट पर्सन आर वेरी लो. बिलीव मी, आई हैव ट्राइड. ठीक है? Means So आपने first round is this. okay. Mhm. And the second round? So second round is generally domain specific knowledge. So that actually is more looking into the field you're applying to. For example, अगर जैसे React के लिए apply कर रहे हो, like it's a React developer job, ठीक है? So they'll ask you a little bit about JS. So JS के कुछ question पूछेंगे. So usually it's stuff like कि अच्छा एक console log बाहर डला हुआ है, एक console log set timeout में डला हुआ है. उसमें एक set timeout 0 का है, एक set timeout 10 का है. तो कौन सा पहले print होएगा, right? This kind of stuff. So वो look up a question bank. वो तीन चार क्वेश्चन ही होते हैं जो ऐसे पूछते हैं जेएस के रिलेटेड. और दे विल आस्क यू अच्छा हम कुछ जैसे एक चैट ऐप क्रिएट करते चलो रिएक्ट में. सो दे विल गिव यू 1 hour and they'll sit with you. They don't worry about styling or anything, but they want to see how do you structure your components, how do you manage your state, कहाँ से क्या चीज पास कर रहे हो, प्रॉपर लिंक करके टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ये सब चीजें. तो वो डोमेन स्पेसिफिक होता है. जैसे अगर बैकएंड में तो वो ये नहीं पूछेंगे, वो ये देखेंगे जैसे वो कहेंगे कि वी हैव वांट टू डिजाइन एन एपीआई, तो ये देखेंगे क्या यूसेज है उस एपीआई, हाउ डू यू वर्जन दैट एपीआई, उस पे क्या क्या मेथड्स तुम अप्लाई करते हो कि अच्छा ये वाली एपीआई पे गेट और पोस्ट रहेगा, इस वाली पे पुट भी रहेगा क्योंकि हमने इसे ऐसे हैंडल करना है, राइट? तो दैट कैन एक्चुअली वे. बैकएंड का मेरे को इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं क्योंकि आई एम नॉट अ बैकएंड पर्सन, बट ओके. हम ओके. बात तो हम्म, हम कहाँ पे थे? आप हम सेकेंड राउंड की तरफ थे. We were on the second. So second round में basically there is this domain specific knowledge. So for example front end पे they'll ask you about JavaScript कि कुछ trick questions होंगे कि अच्छा how do you create a currying function, या फिर दो तीन set timeouts है और एक console log बाहर पड़ा है कि, या फिर closures के बारे में पूछेंगे, right? So there will be some trick questions there जो language specific है. उसमें they look up a question bank, you will see most of the questions there. Honestly like जैसे करिंग और डिबाउंस या थ्रॉटल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरी इंटरव्यू रिपीट्स इट. लाइक मेरे अभी इंटरव्यूज चल रहे थे, आई गिवन लाइक 7-8 इंटरव्यूज टू 7-8 कंपनीज नाउ, एंड हर कंपनी ने पूछा एक थ्रॉटल या डिबाउंस का क्वेश्चन. उसमें से 3 कंपनी ने करिंग के क्वेश्चन पूछे हैं, दे रिपीट द वो. सो फॉर एग्जांपल एंड लेट्स से यू आर इंटरव्यूइंग फॉर फ्रंट एंड, लाइक सो सीएसएस के क्वेश्चन पूछेंगे, सेलेक्टर्स के, ठीक है, ग्रिड वर्सेस फ्लेक्स बॉक्स और इन सब चीजों के क्वेश्चंस पूछेंगे, थिंग्स लाइक दैट. और दे माइट आस्क यू टू एक्चुअली क्रिएट स्टफ. सो दे विल हैव आइदर टेक होम, और ऑल द टेक होम का आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर कंपनीज टेक होम नहीं दे रही है, बट दे माइट हैव टेक होम एंड दे विल हैव यू नो सेटअप say कि अच्छा let's create a chat box together or something like that, and they will actually what they're trying to see is not कि अच्छा कितना सुंदर तुम उसे बना सकते हो, they're trying to see how you structure your code, how you manage state and everything, right? So I'm talking very specifically on the front end side. The back end side consideration is different way. You know, they might ask you about कि भैया what are the benefits of SQL versus no SQL, कहाँ पे caching करोगे Redis में, या फिर API की वर्जनिंग कैसे होती है, उसके different verbiage API endpoints के. So that might be what they're looking for. Again, I'm not a backend person, so I'm not like a good authority on that.
but that is what they ask. Like usually the second round is around domain knowledge, right? अब इसमें there is +1 +2. Sometimes there's called a bar raiser. Bar raiser में क्या होता है? They will set up an interview either within a company, but from a different team, or somebody from completely outside the company. वो it can depend what they ask you. They can ask you system design, like depending on what role you're interviewing from. They can ask you this system design, or they can actually go again through either AlgoDS or Go. So उसमें ना एक mix रहता है. You can never be too sure. Generally, HR will let you know what they ask you for. Okay. Hello. Hello. Hi, Gagan. Yeah. Have you lost me or am I audible now? Hi, Gagan. Your video is paused. Oh, No, no, I can hear you, but yeah, you're audible. Okay, okay. I just your video is paused, so I was worried कि you're gone. ठीक है, Okay. Okay. so I'll continue. So Yeah. generally, so the variances की कई बार algorithm के एक दो राउंड हो जाएंगे, कई बार domain knowledge के एक दो राउंड हो जाएंगे, and depending on the company, so for example Hotstar and all, they'll do design rounds as well. So there is this thing called HLD and LLD. HLD is like high level design of how you actually structure a system. वो कहेंगे जैसे कि भैया हमें Tinder बनाना है या हमें Uber बनानी है, तो and in that way they'll ask you to structure how you structure कि भैया where we'll actually keep the data, like हमें Postgres deploy करेंगे इस चीज के लिए, हम एक Kafka की event queue Yeah. बनाएंगे, but those Yeah. are usually backend का stuff. I'm not actually all that aware of it. Front-end ones are mostly focused on LLD, in the way that they are focused on how you will actually create like the classes that will hold the data, or let's say like for example most of the wo has moved towards functional from front end, we moved towards functional. So Sure. they'll ask you about how you will model the data, what will be your DT objects that you have passed to and fro, right, and everything like that. So that is that, but that happens like in like let's say 1 in 3 companies, right? Usually, like the higher end companies ask for design rounds. The lower end companies don't bother themselves with all that much. Okay. Then you'll have a hiring manager round, and honestly, that depends on your hiring manager. Hmm. Like sometimes you just have a chat, sometimes you discuss about कि भैया what are you passionate about and all that stuff. And sometimes like for example Swiggy में मेरे साथ तो मतलब उन्होंने बोला कि कौन सी लैंग्वेज सबसे अच्छी लगती है, Hmm. तो मैंने कहा स्विफ्ट. तो दे एक्चुअली गॉट इनटू लाइक डिस्कशन विद स्विफ्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट कि भैया मतलब व्हाट डू यू लाइक अबाउट स्विफ्ट, व्हाट डू यू लाइक अबाउट जावास्क्रिप्ट. हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया स्विफ्ट में बैठ के साथ में. तो Okay. लाइक दैट वाज अ पेयर प्रोग्रामिंग. सो वो देखना चाहते हैं कि मतलब हाउ डू यू फिट. यूजुअली hiring manager round is where they actually also see whether you will fit into the culture of the company. Like, now as a fresher they don't have all that much concerns, या थोड़ी concerns बाद में जाके ज्यादा बन जाती है. Freshers का they think कि अच्छा भैया इसको हम so like a clay we can mold it. But कई बार there have been times where if you're too headstrong or too adamant, you have been like क्या कहते हैं, you have been pushed out of a interview process. Hmm. उसमें मैं कहूंगा कि don't feel too discouraged about it, क्योंकि Okay. अगर कई चीज होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. कई बार भैया हायरिंग मैनेजर गंदे मूड से बैठा है, ठीक है. सो देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, एंड ऑल्सो देयर आर सम थिंग्स दैट यू कांट चेंज अबाउट योरसेल्फ. सो अगर तुम आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन हो, ठीक है, और उन्हें आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन नहीं चाहिए, तो अच्छा है तुम उस कंपनी में नहीं गए, क्योंकि तुम दुखी रहते हो उस कंपनी में जाके. Okay. सो इट्स बेटर कि कई बार अच्छी चीज होती है कि तुम कल्चर फिटमेंट राउंड्स में आउट हो जाओ. बट यूजुअली आइदर कल्चर फिटमेंट राउंड तुम्हारे हायरिंग मैनेजर के साथ होगा, नहीं होगा तो कोई सी स्वीट का बंदा या फिर उसका कुछ लेवल मैनेजर मैनेजर का. Hmm. एंड क्या कहते हैं, वरना एचआर करेगी कल्चर फिटमेंट. और इट डिपेंड्स कि वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. मैंने मतलब आई हैव डन कल्चर फिटमेंट राउंड्स विद स्वीट पीपल, आई हैव डन कल्चर फिटमेंट राउंड्स विद एचआरस. सो Okay. यू कैन नेवर से. So this is usually the interview process for freshers that I've seen in like front end dev market. Back मतलब backend का I can't, like you will have to get a backend person for it. Hmm. So but backend का भी मतलब domain specific knowledge वाली चीज चेंज होनी चाहिए, बाकी सब तो सेम ही रहना चाहिए. like डिजाइन के वहाँ पे शायद ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, algorithm a little bit harder होगी backend पे, but Okay. yeah mostly it should remain the same, at least अच्छा. for the core IT fields. अच्छा. But that actually changes a bit as you progress further. So on senior level, actually, algorithm even like interviews there, but वो even easier questions है. Like it doesn't matter. So usually what happens is कि 15 दिन पहले हम लोग we sit down with algorithm and lead code पे बैठ जाएंगे, like doing a few questions.
and usually that helps us crack most of the questions. Domain specific knowledge now that goes into real depth, and there's also now there's a lot more focus on design. So that actually, so on front end, I can tell you, on back end, again, not all that context, but on front end, that can go in either of two ways. Either they'll give you a problem and you'll be asked to architect. So ऐसे कह देंगे कि भैया, like for example, अभी मेरा एक इंटरव्यू है जहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि we have to create a chat app between like customer service folks and consumers on the other end. और बेसिकली एक ही वेब ऐप रहेगी जो मोबाइल के अंदर कंज्यूम होनी है, और क्या कहते हैं, जो हमारे कस्टमर सर्विस एजेंट होंगे वो डेस्कटॉप पे बैठे होंगे उस वेब ऐप के अंदर। तो नाउ आई हैव टू अर्न, उसके ऊपर एडमिन्स हैं जो टिकट असाइन भी कर सकते हैं। सो मतलब अब ये सब एडमिन वाली पॉइंट उन्होंने बोला नहीं था, तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी आर्टिकुलेट एंड ऑल्सो आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि अच्छा, विल देयर बी एडमिन्स, और हाउ आर दी, मतलब लेट्स से कि एक कस्टमर है और एक सर्विस एजेंट है, सर्विस एजेंट को टिकट कैसे असाइन हो रही है, इज इट ऑटोमेटिक असाइनमेंट, इज इट सम एडमिन एक्चुअली असाइनिंग इट, इज इट बोथ? ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत पूछो। और इवन व्हेन यू आर लाइक गोइंग इन एल्गो डीएस ना, एकदम से कोड लिखना ना शुरू कर दो, फर्स्ट ट्राई एंड एक बार दिमाग में जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट द सॉल्यूशन कुड बी, एंड इवन व्हेन यू आर राइटिंग कोड, इवन इफ यू नो द सॉल्यूशन, तुमने देख रखी है प्रॉब्लम जो उसने दी है, इवन देन एक्चुअली आर्टिकुलेट व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ कि अच्छा हाँ भैया, हियर आई एम क्रिएटिंग ए हैश मैप क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ और मैं वो सोच रहा हूँ। सो टेक देम थ्रू द प्रोसेस, डोंट जस्ट टाइप इट आउट। हाँ, type out and executing is a really good part, मतलब really important part of it. But you also have to take them through your thinking process because that's what they're actually looking for. वो उस प्रॉब्लम को एग्जैक्ट सॉल्व नहीं चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भैया तू हाउ डू यू अप्रोच द प्रॉब्लम, एंड वंस दे अंडरस्टैंड दैट, क्या कहते हैं, it doesn't matter all that much, right? So ask a lot of questions about the, मतलब if you have any doubts, ask. ठीक है, the worst that can happen is they'll say कि अच्छा you have to figure it out on yourself. वो तो वैसे भी तुम्हें करना है, but ask a lot of questions, ask a lot of clarifying questions. And the second thing is you talk to them and you take them through your thinking. So, can you give the roadmap for the front-end developer? So, means if any fresher is starting that front-end developer, so how can that fresher start that front-end developer? So, can you give? Sure. So it depends what part of front end you want to engage with, right? So there is mobile applications as well as there is web apps. Like desktop apps, आजकल इतना कोई market नहीं है उसका. But for web app versus mobile app, if you can focus on it, I would say go for mobile app because it pays better, right? So there, like, but the roadmap remains the same. First, learn the fundamentals of language, right? And then learn the platform. So that would be, so for example, on Android, first you learn just the fundamentals. You don't have to go into very depth about कि Kotlin कैसे है, क्यों है, ठीक है? That you learn as you learn the platform. But first learn Kotlin, or if you're iOS, learn Swift, right? On क्या कहते हैं, web you learn JavaScript and then throw it out and then learn TypeScript, ठीक है? And on web, actually, I would say कि pick React, ठीक है? You do need to learn how basic web manipulation works in JavaScript, like how query selector works, ठीक है? You should know all that stuff, but then you should know what the industry standard is, and at the moment industry standard is React and it's going to remain that way at least for the next 5 years. ठीक है, उसके बाद it's your choice. If you want to actually go into a full stack direction, you can actually start learning something like Next.js or Remix, right? So you actually learn how the server and the front end can integrate very quickly. Or if you but like there will be a point where you need to know SSR. I'm not sure where it's at the freshers level. At the freshers level, I think you should be fine with the CSR, so client side. So what you can do is there are a lot of free APIs out there. So there is a Pokemon API that is free. Uske around build an app. Okay, or build another app where you can use like something like a Firestore from Firebase, or you can use Supabase, or you can use PlanetScale. Create a free account there and create a full-fledged app that you can show. It doesn't have to be something complicated. Don't think about the business use case for it. Matlab, it doesn't matter whether it's a Zomato clone, it's a to-do app. It doesn't matter all that much. But two things that matter is you can actually, it is out there that anybody can see. So if it's an app, it needs to be on Play Store.
If it's a web app, it needs to be somewhere where you can hit a URL and check it out. Even if it's a free URL, that doesn't matter, but it needs to have a static URL, right? And you need to know a little bit about deployment stuff. So you need to know things like S3 पे deployment करेंगे कि कहाँ करेंगे, and Hmm. also like how CDNs work and things like that. But वो basic level की knowledge should be fine enough for you. Right now, if you want to do it, like very good alternative for all the stuff is GitHub Pages. GitHub Pages पे you can quickly deploy any CSR app. So आराम से React app plate करो, अपने GitHub Pages पे deploy करो. There are guides for it online. You can search how to deploy on GitHub Pages and show it to the world. Create a portfolio, right? Hmm. Also, algo DS is important. So I would say कि first get a grasp of algo DS. So क्या कहते हैं, I'll message you the क्या कहते हैं the book that I was referencing, so you Yeah, can yeah, put it in the description yeah, yeah. and Sure. just go through it. If you have time, go through it. If you don't have time, go to neatcode.io. So Hmm. it's lead code, but starting with N, Okay. neatcode.io. Hmm. And they have a very good roadmap that you can follow. Usme you don't even need to go through to the lowermost levels. Once you go to trees and heaps, that is fine. That is more than enough for you, right? Okay. Front end way, it's what matters is ki you have a very good working understanding of the complexity of a solution, Yeah. right? Because front end way, we are working with very limited resources. Especially one thing that you have to consider is ki a lot of people are now consuming your web app on mobile. So mobile पे if your React app is leaking memory like anything, वो Hmm. problematic हो जाएगा. वो तुम्हारी Okay. app को वो बिल्कुल performance उसकी चली जाएगी. So you should know the basics about all this stuff. But first get building. Once you get building, then you'll realize ये सब चीजें. So for example, if you create a lot of listeners अपनी app में, ठीक है, Hmm. और फिर scroll करने पे बड़ी देर से slow scroll हो रहा है, Okay. then you'll research about it and you'll understand कि अच्छा भैया लिसनर्स लीक कर सकते हैं, उसको क्लीन अप कैसे करना है, ये सब कैसे करना है. So I would say first get to building and also don't ignore algorithms. Okay. Do these two things and you will very easily get it. Like you have distinguished yourself from 80% of the people. 80% लोग ये भी नहीं कर रहे. Okay. Like they can't solve a simple algorithms problem, or they don't know what a use effect is in a React. Okay, so once you pick this lane and you Hmm. actually focus on it, then like sky is the limit. Okay. The only thing Okay. that will matter is how much your effort you're willing to put. Similarly, if you can, uh, like I would say, by Android, there are a lot of opening, like things like Jetpack Compose coming in. There's a lot of stuff that is happening in Android, and honestly, like mobile always pays better. There are lesser jobs for it, but also there is lesser competition for those jobs. Okay. So अगर if you have a lot of money, go for iOS development because in that case you need a Mac at least. But अगर नहीं है आपके पास तो go for Android development. और अगर वो भी नहीं करना चाहते क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता यार. मैं Yeah. like I do app development, but I'm honestly more gravitated towards web development because like I want to like later on move to a full stack direction. So मैं उस तरफ gravitated हूँ. And full stack mobile पे possible है, but like the way it works is very different to how let's say in Next.js it works because there the front end and back end की boundary बिल्कुल blurry हो जाती है. So I'm more gravitated towards it. But if you don't like app development, go for web development. Yeah. Like the market is saturated, don't get me wrong, and it's harder to get in now. और क्या कहते हैं जो वो there were days जब बिल्कुल ही जिसको कुछ भी नहीं आता था उसे बहुत मोटी मोटी सैलरीज मिल रही थी. Yeah. Those days are gone. It is hard in the market right now. Don't get me wrong. मतलब, Yeah. I don't want to make it sound easy. The one But if you topic, do, the one हाँ, topic I if want you, to talk about you Mhm. means कि हमको means I just want to talk about कि recession. What's going on about recession means recession बहुत चल रहा. कंपनी हायरिंग मीन्स बहुत कम हो चुके हैं. सो इसमें कैसे सर्वाइव करें वो भी आपसे पूछना था. देखो, recession will pass, ओके. but the state of things will never return to what it was because वो ना एक बहुत particular circumstances की वजह से था. यूएस में 0% इंटरेस्ट रेट चल रहा, ओके. राइट? जिसकी वजह से वीसी अपना पैसा कहीं भी फेंक रहे थे और उसकी वजह से कंपनीज पागलों की तरह हायरिंग कर रही. Right, they were not concerned about profit, they were not concerned about anything. Now everybody is concerned about profit, everybody is concerned about and a lot of money of a company goes into developer salary because developers are not cheap, especially good developers, या. right?
So that market is going to remain like at least for 2 3 years. It is going to remain like this. Okay. So the first thing you should aim for is referrals. Uh, Try to crack referrals. Okay. Cold approach करो लोगों को LinkedIn पे who are part of the company कि भैया can you put in my referral, this is what I've done, this is everything. ठीक है, मतलब don't just message your resume, also tell them a little bit about yourself and what you've done and what you aim to do. ठीक है, but even cold approach people, if you have people who work for a company, ask them are there openings. ठीक है, and मतलब you should always aim for referrals because referrals will actually get you faster in that stack. So usually क्या होता है, there's a stack of applicants. ठीक है, उसमें तुम अप एंड डाउन होते हो बेसिस कि तुमने कितने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तुम्हारे क्या एक्कोलेड्स एंड एवरीथिंग है. ठीक है, वो एचआर उठा के हायरिंग मैनेजर को देगा, हायरिंग मैनेजर उसमें से सॉर्ट आउट करके 10 सिलेक्ट करेगा 50 में से, और वो 50 में से फिर आगे राउंड के एलिमिनेशन राउंड्स होते रहेंगे, सो उस हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा. सो व्हाट आई टोल्ड यू टिल दिस पॉइंट इज कि जब तुम सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने से पहले के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो, दैट वे यूर अपर मोर अप इन द स्टैक, राइट. Also you can look into OSS contributions, so open source contributions. ठीक है, and it doesn't have to be something कि अच्छा you are actually fixing, जैसे transfer query में fix कर रहे हो, कर सकते हो तो करो, but there is also a lot of documentation stuff that is needed. So there are a lot of libraries जहाँ पे documentation अच्छी नहीं है, या फिर documentation है but उसमें थोड़ी outdated है, उसको update की जरूरत है, कुछ भी जरूरत हो सकती है. Help with the docs. Even if you don't understand how the library works, you actually can use a library, right? Let's say कि the difference between code, well, consuming code data and actually writing the logic for code data is very different. I can consume code data, but मैं C++ में जाके लिख नहीं सकता code data. But you know how to use the code data, right? So if code data की documentation is missing, help with the. Code data is not a good example because code data is proprietary, but you get my gist, right? कि मतलब help with documentation and stuff. Basically, all any hackathons and everything that happen, participate there. Because usually what happens is hackathons और इन सब के judges are also part of corporate world. अगर वहां पे you're performing well, they will have their eyes open. Honestly, referral is the sure shot way. और वो जो hackathon वाली चीज कह रहा हूँ और OSS contributions कह रहा हूँ, वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि that is the sure shot way of actually getting into the radar of people. Once you're in radar, हम चाहते हैं यार कि हम referral डाले, if for nothing else की जो referral bonus हमें मिलेगा. Okay. राइट, हमें तो चाहिए, हम डालना चाहते हैं रेफरल, बट हम किसी का भी रेफरल इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि अगर गलत रेफरल्स हम बार बार डालेंगे, हमारे रेफरल सीरियसली टेक करेंगे, राइट. या सो वी नीड टू पुट पीपल हु एक्चुअली आर लाइक द मेटल इज देयर. ओके सो referral is something you should aim for, but also build a portfolio, build something that you can show to the world. Okay. And I think this is a good answer for the freshers or the students of a tier 3 colleges, tier 3 college students, because वो भी ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे because कॉलेज में तो उनके कॉलेज में तो नहीं आते. And this video is for those guys only because I am trying to reach out to the students of a tier 3 colleges कि उनको भी पता चले how would be the roadmap to reach the big MNCs or the big startups. I think this is a good answer for that. Yeah, and honestly, like there is a bad rap. Like मैंने भी जब मेरे को विप्रो या वो मिल रहा था इन्फोसिस, मैं भी अरे यार ये साले 3 लाख रुपए पे करेंगे साल के, बिल्कुल रद्दी छाप काम करवाना है इन्होंने. बट ऑनेस्टली इट्स नॉट ऑल दैट बैड, प्रोवाइडेड कि यू हैव अ एस्केप प्लान. वहां से मेरे दोस्त जो 6 महीने टू 1 साल में निकल गए ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो इस समय एक उसमें से एक बंदा गोल्डमैन सैक्स में एम्प्लॉयड है, लाइक ही वेंट टू निसान देन ही वेंट टू गोल्डमैन सैक्स, सो ही इज अर्निंग रियली वेल एंड ही इज डूइंग रियली वेल, राइट. एंड एक और बंदा निकला, वो ही स्टार्टेड हिज ओन एआई कंपनी एट दिस पॉइंट, मतलब उसका अपना खुद का स्टार्टअप है उसका. सो provided you have a roadmap to escape, go for those companies, get into the industry first, right. But of course for tier 3 colleges placements, as you said, the placements zyada अच्छी नहीं होने वाली, right. So उस केस में even like I'll give you an example. मेरे स्कूल का जूनियर था who is in a tier 3 also. I studied from JP in Noida, right. It's like close enough to a tier 1 college as far as private colleges goes, right. Not public कॉलेज. अगर तुम पब्लिक कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है, राइट, यू विल गेट समवेयर. बट क्या कहते हैं, फॉर प्राइवेट कॉलेजेस
even in that there was a, well, at the end of the day अगर SAP या उस सब में placement नहीं हुआ तो you have TCS and Infi to sit for, right? क्या कहते हैं, बट टीयर 3 कॉलेज में कई बार ये भी अवेलेबल नहीं होता। बट मेरा एक स्कूल का जूनियर था, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम अ टीयर 2 सिटी, राइट, लाइक अंबाला इज अ टीयर 2, आर्ग्यूबली टीयर 3 सिटी। सो वहां पे स्कूल का जूनियर था हु रीच्ड आउट टू मी एंड आई पुट इन हिज रेफरल। तो इवन अगर तुम्हारे स्कूल के भी सीनियर है जो कहीं और बैठे हैं ना, जस्ट कीप अपडेटेड एज मेनी सोर्सेज एज यू कैन। और इसमें कोई कभी रेफरल के लिए पूछने के लिए और उसमें ना शर्म शर्म को बिल्कुल भूल जाओ। डजंट मैटर, ज्यादा सादा बंदा ना ही कहेगा ना, कहन दो ना साले को, डजंट मैटर। शर्म शर्म कुछ नहीं कोई। यू हैव टू फर्स्ट गेट इनटू द इंडस्ट्री, गेट इनटू द इंडस्ट्री, देन यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू अ बेटर प्लेस। फर्स्ट गेट योर फुट इन, क्योंकि वंस यू गेट द फुट इन ना, बिकॉज even for a senior like me it's hard. I had to interview for like a lot of companies and they were not, like in my case they were not even willing to pay the number I was wanted, right? A very few companies were. Okay, for me there is a dearth of jobs, so for a fresher it's even more harder, so you have to work twice as hard. Okay, but I loved one answer that you said ki first go to the industry, then approach the big top MNCs or big top startups like Exactly. Uber, yeah, and this is a best guide to the students of a tier 3 colleges. First go to the industry and then approach the big MNCs or big startups. I think this is the good answer from your side. Because honestly, after you've been in the industry for a long time, right, you might even realize that you don't do well in MNCs. Like there is a point after which you realize that I do well in a structured environment or I do well in a chaos environment. If you do well in a chaos environment, you should aim for startups, choti startups, and choti startups will pay well as well. If they have funding and everything, they will pay you well, right? Maybe it won't be as much as what Uber pays you or what Ola pays you, but if that startup blows up, it doesn't matter because वहां पे तुम्हें हर साल 10% की इंक्रीमेंट मिल रही है, वर्सेस यहाँ पे तुम्हारी इंक्रीमेंट हर बार 20-30% की करेक्शन मिनिमम होगी। So it doesn't matter as far as monetary work concerned. And of course, monetary thing, once you reach a level, it doesn't matter all that much. It matters in the beginning, don't get me wrong, ठीक है, बट एक बार तुम्हारी सैलरी, मतलब एक बार बैंक अकाउंट में 1 लाख से ऊपर पैसे आने शुरू होते हैं ना, उसके बाद जो बाकी इंक्रीमेंट है ना वो ऐसा हो सकता है, अच्छा चलो भाई मैंने गाड़ी ले ली, अच्छा चलो मैंने ये करवा लिया वो करवा लिया, बट तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, तुम्हारी हैप्पीनेस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं उससे पहले, राइट? देयर इज अ सैलरी लेवल, जहां तक जब तुम इंक्रीमेंट करते रहोगे, ठीक है, 20,000 से 50,000 जाओगे बहुत खुशी होने वाली है, एंड यू विल बी ओवरऑल वेरी हैप्पी। ठीक है, 50,000 से 1 लाख जाओगे फिर खुशी होने वाली है, 1 लाख से 20 जाओगे, ठीक है, 1 लाख से 70 भी जाओगे, इवन दो इंक्रीमेंट सबसे बड़ा है, ठीक है, तब भी विल बी लाइक हाँ लाइफ तो ऑलमोस्ट सेम ही है यार, बस मैंने गाड़ी और ले ली उसकी ईएमआई भर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आफ्टर अ पॉइंट it is not always about the compensation, it is also about what you enjoy doing, because you can't always be miserable यार, कितने साल तुम अपने क्या कहते हैं घिस रहे हो खुद को, ये this is sustainable for the first few years, not after that. So you will also need to find what you're interested in. Okay. And if I will ask one question, I am asking you one question. What you will prefer if if you are getting into the top MNCs, then you will prefer that MNCs or you will prefer the startup? Honestly, I'll give you an example. अभी मेरे पास offers हैं outstanding. एक काफी फेमस एमएनसी का है, एक फिनटेक एमएनसी का, और एक स्टार्टअप का है जो इंडिया में कोई नहीं जानता, इट्स एन अमेरिकन स्टार्टअप, और उनके पास है भी टोटल 80 लोग हैं, फ्रंट एंड में देयर आर लिटरली 4 पीपल, एंड आई एम गोइंग फॉर द स्टार्टअप राइट नाउ, इवन दो इफ यू सी माय रेज्यूमे इट्स लाइक वर्किंग फॉर ऑल एमएनसीज, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि आई डोंट इवन नो व्हाट आई प्रेफर, सो आई नीड टू फर्स्ट एक्सप्लोर the startup space to understand, अच्छा do I actually prefer the startup space, हो सकता है कल को I don't prefer the startup space, ठीक है, आई गेट अ जॉब बैक इन एन एमएनसी, मैंने अभी क्रैक कर लिया, मैंने तब क्रैक कर लूंगा। सो यू हैव टू एक्सप्लोर दिस आंसर, nobody can actually answer this, so मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो आई एम एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लोर नाउ, सो मैं इवन दो द स्टार्टअप इज प्लेइंग अ लिटिल लेस देन द एमएनसी, आई एम गोइंग विद द स्टार्टअप, आई एम लाइक ठीक है करना है। Okay. Yeah, so this has to be an answer for yourself, because it's not just about the money, you know,
इट्स ऑल्सो अबाउट कि उस एनवायरमेंट में, स्टार्टअप में ना बहुत चीजें बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होती है, Okay. एवरीथिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है. सो इफ यू कांट डू वेल इन केओस, मे बी स्टार्टअप इज नॉट फॉर यू, ठीक है. एमएनसी में हर चीज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है, बट दैट आल्सो मींस यू आर ब्लॉक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, कि अगर अच्छा बैकएंड ने अभी ड्रॉप नहीं दिया है, ठीक है, क्यों अभी रिपोर्ट के साथ वापस नहीं आया है, फिग्मा में डिजाइन अपडेटेड नहीं है, डिजाइन टीम को बोलो. वहां पे स्ट्रक्चर है, दैट एक्चुअली गिव्स यू गुड गार्ड रेल्स, ठीक Okay. है. एंड आई वुड से कि वन एज अ फ्रेशर यू शुड एक्चुअली एम फॉर एमएनसी, बिकॉज Hmm. स्ट्रक्चर्ड में लर्निंग थोड़ी आसान रहती है, अनस्ट्रक्चर्ड में लर्निंग थोड़ी मुश्किल रहती है. Okay. But Okay. after you've learned a little bit about an industry, you know, you're a free bird. You can go wherever you like. Okay. And Don't think about कि अच्छा ये MNC है, इसका नाम पड़ा है. It doesn't matter all that much in the long term. okay, the one last question I want to ask to you, that is, in this era, what is important? As I think DSA is important or development, or both are important for cracking the good job. For a good job, both are important. Both are important. Really important. Yeah. A lot of DSA, I'll tell you, a lot of DSA is something that you'll never see in your real life. ठीक है. Hmm. It's like a secret handshake. Okay. But and a lot you might think यार ये stupid है, मैं क्यों सीख रहा हूँ साला टू लेवल डायनामिक प्रोग्रामिंग जब मैंने जाके रिएक्ट के कंपोनेंट ही बनाने एंड में. Hmm. हाँ ठीक है, तेरे लिए स्टूपिड है, आई गेट इट, बट इट्स ऑल्सो स्टूपिड इफ यू नो देयर इज अ सीक्रेट हैंडशेक एंड यू आर नॉट लर्निंग इट. योर टास्क इज टू गेट इनटू द इंडस्ट्री. इफ दैट इज द स्टैंडर्ड, लर्न द स्टैंडर्ड. Okay. कोई बड़ी बात नहीं है. एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर गोइंग टू डू. एंड गिवन दैट आई सेड ना कि मार्केट की जो हालत है, you need to distinguish yourself. So if you have something out there, you're already doing the development, right? So it's both of things are really necessary. You have to keep both of things in track. तुम एक को दूसरे के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते. Okay. Okay. Yeah. So I am very thankful for you for coming to my channel and sharing your wonderful My journey. pleasure. I was very excited to know your wonderful journey. So thank you for coming here. I will be sharing your LinkedIn profile and all your accounts in my description box. So thank you for coming here. Sure. Thanks again. It was really a pleasure talking to you. Thanks.